Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. My name is Ashish Bhargav and I welcome each and everyone here. कैसे हैं आप लोग? I hope that you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. Before we start, please let me know if my voice is audible. Am I visible to everyone? So before we start, I just want to tell you like what exactly we discuss in news analysis. Majorly we discuss about the Hindu, Indian Express, the two prominent newspaper. So most of the current affairs के जो questions हैं आपके जिनका main source है आपका newspaper analysis. And the important news that we cover in this session as well, like PIB, like government website. What exactly we discuss? We discuss mainly like national news, international news, economy-based news, sports-based news, science and tech, personal news, summits and conference. And apart from that, we also discuss Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament. This is very important. Make sure guys, if you are new in this channel, please subscribe our channel. And here is the quote of the day, that nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे questions of the day. We'll ask you the 5 questions that will gives you an immense idea कि आपके एग्जाम में न्यूज़ पेपर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और पूछे जा सकते हैं. एंड क्विक टिप्स में विल हेल्प यू सम काइंड ऑफ निमोनिक्स दैट विल हेल्प यू आउट, लाइक व्हाट थिंग्स दैट यू नीड टू कीप एन आई, लाइक G20 कंट्रीज़ में, G7 में, लाइक SCO समिट्स में कितने कंट्रीज हैं, SCO में कितने कंट्रीज हैं. सो दिस ऑल विद द हेल्प ऑफ क्विक टिप्स और विद द हेल्प ऑफ mnemonics we'll discuss in the today's session. Here is the very first article talking about after Prague sister, the highest title that a chess player can attain once earned itself for life. Vaishali Ramesh Babu became a grandmaster by crossing 2500 International Chess Federation, जिसे कहते हैं FIDE, which is grandmaster by crossing international Chess Federation, which means FIDE, that ranking points of 4th EI like Llobregat Open in Spain on Friday. और इनका नाम क्या है? दैट इज वैशाली रमेश बाबू. एंड रमेश बाबू प्रगन था, मतलब दोनों ये भाई बहन हैं. और फर्स्ट टाइम में इन्होंने क्या किया, ग्रैंड मास्टर बाय क्रॉसिंग 2500 FIDE रैंकिंग. ग्रैंड मास्टर जो टाइटल होती है माय फ्रेंड्स, तो ग्रैंड मास्टर टाइटल एंड अदर चेस टाइटल्स आर अवॉर्डेड बाय FIDE, दैट इज फ्रेंच नेम, दैट इज फेडरेशन इंटरनेशनल डेंशे, दैट वाज इन द स्विट्जरलैंड. और ये FIDE कहाँ पे है? दिस इज इन द स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल जो है वो है बर्न. एंड द टाइटल इज अ बैज ऑफ द गेम सुपर एलीट, रिकॉग्निशन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेस talent on the planet, which has been tested and proven against a peer group of other similarity, the talented players in the world. So all such chess title that are given by the FIDE, that is valid for the life. So any title if you got from the FIDE, that is valid for life, entire life के लिए होता है, unless a player is stripped of the title for a proven offense like cheating and all. ये जो ग्रैंड मास्टर की शुरुआत होती है बेसिकली कब से स्टार्ट होती है? इट वॉज फ्रॉम द 1950 से. The term grandmaster is about a century old and was initially used to a generic expression to describe a player who was better than just a master. So just 1950 में, that was an year, ये जो साल था आपका 1950 का, जो FIDE थी आपकी, जो ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करती है, FIDE started formally designation the best players as a grandmaster based on the set of let down criteria. So 27-year grandmaster titles was awarded in the first batch in 1950. और वो कौन थे हमारी? इनका नाम था मिखाइल बॉटविनिक, जो उनका नाम था, दैट वाज स्टॉइल USSR. क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सो जो FIDE अवार्ड है चेस हाईएस्ट ऑनर टू अ प्लेयर्स हु कैन अचीव अ FIDE क्लासिकल स्टैंडर्ड्स रेटिंग ऑफ 2500 प्लस 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स. सो ब्रॉडली एक प्लेयर जो होता है मस्ट हैव अ परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ 2600 ऑफ हायर देन FIDE टूर्नामेंट्स and that has 9 rounds, playing against several opponents from federations or countries other than one to which the player belongs, and those opponents must be titled themselves.
चले COP28 के बारे में कल भी हमने डिस्कस की थी, मेनी आर्टिकल्स आप देखोगे न्यूज़पेपर में आपको मिलेंगे। बेसिकली ये कहाँ पे हो रही COP28? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, COP, एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दैट इज होस्टेड बाय UAE, और UAE के प्रेसिडेंट कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल। सो ये जो मीटिंग है दुबई में हो रही है, UAE में। सो इनमें मेजरली हम क्या डिस्कस करने वाले? लास्ट ईयर COP27 जो हुए थे, वो COP27 हुए थे यहाँ पे शर्म एल शेख इजिप्ट में लास्ट ईयर। सो व्हाट इज द लॉस एंड डैमेज फंड? सो इन शॉर्ट अगर इसे समझने की कोशिश करें तो लॉस एंड डैमेज फंड जो है दैट मीन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्री दैट सफरिंग फ्रॉम क्लाइमेट डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड एक्सट्रीम नेचुरल कैलेमिटीज, वाइल जो क्लाइमेट चेंज है दैट हैज बीन रिजल्ट primarily टू एक्सेस ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। सो रिसेंट स्टडी हमारा ये कहता है जो क्लाइमेट डिजास्टर है दैट लेड टू द लॉस ऑफ अबाउट $1.5 ट्रिलियन इन 2022। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है दैट सफर्ड अ लॉस ऑफ एवरेज 8% ऑफ देयर GDP बिकॉज ऑफ देयर डिजास्टर। सो ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन से गैसेस आते हैं माय फ्रेंड्स? इसमें वाटर वेपर आता है आपका, और नाइट्रस ऑक्साइड आता है, नॉट नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेक श्योर दैट नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, and with CO2 जो है that is responsible for most of the global heating. So India जो है is responsible for about 3% of historic emission, और चाइना जो है वर्ल्ड हाईएस्ट emitter in the last 15 years. So ये सारी चीज़ें पॉइंटर्स आपको अपने माइंड में रखनी होगी कि why it is important. चलो नेक्स्ट वन, हाईएस्ट केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस मेक दिल्ली मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन। अब ये जो आर्टिकल है दैट इज यू विल स्टार्ट टू नो कि जो सिटी रजिस्टर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन अमंग 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। सो एटलीस्ट 3 केसेस ऑफ रेप रजिस्टर्ड एवरी ईयर इन 2022, और सबसे अनसेफ इसमें दिल्ली को माना गया इन टर्म्स ऑफ वुमेन की बात करें तो, सेक्सुअल वायलेंस की बात करें तो। So Delhi is the most unsafe metropolitan city for women in the country, recording on average 3 rape cases daily, according to an annual report by National Crime Record Bureau, जो आपका NCRB का डेटा है, National Crime Record Bureau का डेटा के हिसाब से। So the Crime in India report release on Sunday को रिलीज हुई है, जिसमें कि 14,000 इंसिडेंट थे, 14,158। Women is too much vulnerable in terms of, अगर मैं बात करें सेक्सुअल वायलेंस की, आपको इसको और एक लिंक कर सकते हैं आप कि जो आइसलैंड है, यहाँ पे आइसलैंड में आप देखोगे जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है आपका जेंडर पैरिटी इंडेक्स में ये हमेशा रैंक 1 पे रहता है, नॉट फ्रॉम दिस ईयर। और जेंडर पैरिटी इंडेक्स में रैंक 1 पे रहने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग द रैंक 1 इन द जेंडर पैरिटी इंडेक्स, द विमेन आर प्रोटेस्टिंग इन आइसलैंड फॉर जस्ट फॉर द रीजन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। सो दिस इज द matter of very serious concern for the government to think about the sexual violence cases, क्योंकि NCRB का डेटा के हिसाब से कि आपकी 1204 रेप केसेस हैं NCRB के डेटा के हिसाब से। एंड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए गवर्नमेंट को? सो हाउएवर वी डू कैरी आउट अवेयरनेस ड्राइव्स टू एक्सप्लेन सेफ एंड अनसेफ टच, and what to do when women and girls find themselves in such situation. We have conducted several such sessions at schools and colleges to make policing accessible. And officer added that the police have been conducting self-defense training camps for women and efficiently working on conducting complaints into FIR. So ये जो है उसके लिए, because the incident of crime against senior citizens ages 60 or above increased from 1,160। अगर क्राइम में देखें वुमेन के अगेंस्ट तो वो आपका 9,782 है। अगर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन देखें तो 5,256 है। एंड किडनैपिंग, एब्डक्शन, क्राइम अगेंस्ट एल्डरली पीपल, मर्डर, साइबर क्राइम्स, इन सब के केसेस अगर आप देखें तो इट्स ऑब्वियस दैट टोटल जो IPC के क्राइम्स हैं दैट वाज इट्स मोर देन 2 lakhs, दैट इज अराउंड 2,45,844। So these things, this is a matter of very serious concern if government need to take it, because the NCRB report is clearly revealed that all the data is talking about that crime against women, crime against children as well,
kidnapping and abduction cases, also crime against elderly people, which is senior citizen, murder and cyber crimes as well. So all the metropolitan cities, that is Delhi is the most unsafe metropolitan city for women as per the NCRB data, National Crime Record Bureau. Let's move to the next article, which is India at the Climate Summit. This is quite similar that the article we had discussed, this one, COP28. So in this article we just need to find it out, like India की emissions कितनी है, and जो COP28 है, which is Conference of Parties, which is Conference of Parties. So Conference of Party kicks off in Dubai, and as the third largest emitter of greenhouse gas, India is the third largest emitter of greenhouse gas. and greenhouse gases में कौन कौन से आते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड आता है आपका, उसके बाद वाटर वेपर इज ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. So India is an influential voice for developing countries as these annual events. And India की जो position है over the years, the promise that it has made, the initiative it has proposed, and यहाँ पे जो हमारी जो third largest emitters हैं उसके बारे में यहाँ पे बात होगी. सो इन शॉर्ट अगर आप देखें यहाँ पे कि इंडिया की क्लाइमेट कमिटमेंट्स क्या हैं, इंडिया की इन्हें क्या क्या इनिशिएटिव ले लिया, एंड द लास्ट ईयर जो हमारा यहाँ पे COP27 में क्या हम उस टारगेट को फुलफिल कर पाए या नहीं, जो हमने मेजरली इसमें डिस्कस की हुई थी. लेट्स मूव टू द, ये आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड पता होनी चाहिए कि इंडिया ने कब होस्ट किया था COP. जस्ट अ सेकेंड, या ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे COP8 दैट वाज होस्टेड बाय इंडिया इन न्यू दिल्ली, और अभी जो है 2023 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हो रही है वो अबू धाबी UAE में, और COP22 दैट वाज इजिप्ट, और मेजरली 3 इयर्स को लर्न रखो. एंड हमने कब होस्ट किया था 2002 में, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8. तो इनमें हम डिस्कस क्या करते हैं, मेजरली जो क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रक्चर क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में. And the next article is talking about the transformative benefit of population level genome sequencing. So many programs that take advantage of unique population and to understand disease prevalence and biomarkers, and use that to find novel trip targets that other efforts seek to use genome data in decision making and medical care. तो इन शॉर्ट अगर देखें, so in the last decades genome has undergone a revolutionary shift with the advent of technology that have significantly improved throughout the reduced the cost of whole genome sequencing, giving rise to the population scale genome sequencing program, where scientists decipher the complete genetic makeup of large population that offering unprecedented insight into the intricate view and of human diversity. So बहुत सारे लार्ज स्केल जीनोम प्रोग्राम्स हैं US में भी, जिससे हमें सीखने की ज़रूरत है. And indeed one first such was the UK's that 1000K genome project, which aimed to bring genomics into the routine healthcare. Here we have with next article, here we talking about the time of जब हमारे फ्रेंच द टाइम ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस सेकेंड, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके टाइम में आपने देखा कि इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी हुई थी, जिसको देखते हैं हमने व्हाट वी हैड लॉन्च ग्रीन रिवोल्यूशन, और ग्रीन रिवोल्यूशन को लॉन्च करने वाले इंडिया में थे MS स्वामीनाथन. MS स्वामीनाथन इज़ द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन. उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉन्ग की, नॉर्मन बोरलॉन्ग जो थे ये फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन हम कहते हैं, इज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. तो माय फ्रेंड, ग्रीन रिवोल्यूशन की ज़रूरत क्या थी? तो वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे 1961-62 में जो हमारे पास थी फूड इनसिक्योरिटी थी, एंड for the achieving that food insecurity we have launched by the MS Swaminathan, the person who launched the green revolution, the high yield variety seeds. The purpose is to achieve the food security, right? So agriculture land quality basically जो बात करें यहाँ पे
इन शॉर्ट जो हमारे चाइना से हमारे पास ज़्यादा एरेबल लैंड है। एरेबल लैंड मतलब होता है माय फ्रेंड जो कल्टिवेटेड लैंड होता है। डिस्पाइट वी हैव मोर एरेबल लैंड, cultivated land, but we are lagging behind in terms of wheat production is concerned, in terms of rice production is concerned, in terms of millet production is concerned. So the reason behind जो हमारी अभी न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जैसे हाइड्रोपोनिक्स एंड ऑल, इसको हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होगी। सो इन एग्रीकल्चर वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर 4 what economists would call factor of प्रोडक्शन। पहला होना चाहिए हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट इज लैंड, वाटर एंड लेबर। एंड ये जो बिकॉज ये जो हमारा अभी भी है, वी आर मोर देन 50% पॉपुलेशन स्टिल देयर लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, और ये डेटा हमारा कहता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से। बट द प्रॉब्लम इज दैट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि जितने लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं उस हिसाब से जीडीपी में उनका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है। सो दैट कि गवर्नमेंट इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहती है कि उसमें न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ होना चाहिए, सो दैट जो प्री ग्रीन रिवोल्यूशन था हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का वॉज primarily limited by the extent of quality land available for cultivation। और इंडिया की अगर फार्म सेक्टर की बात करें नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, सो 1961 और 62 में जो हमारे हम क्यों नहीं अचीव कर पाए फूड सिक्योरिटी को। सो यहाँ पे 118.75 जो था हमारा लाख था वो अब 135 तक हम पहुँच चुके हैं, राइट। सो एग्रीकल्चर लैंड क्वालिटी इज अ फंक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर अवेलेबिलिटी। सारे स्टेट्स के पास नहीं है। जैसे आपने देखा होगा ग्रीन रिवोल्यूशन जब लॉन्च हुई थी हमारे इंडिया में, उस टाइम में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के लिए ओनली वेस्टर्न यूपी एंड हरियाणा एंड पंजाब का जो एरिया था दैट वाज फ्लोरिश्ड ऑन दैट टाइम। those states who got advantage is पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। वाई नॉट एंटायर इंडिया? बिकॉज ये रीजन है कि सारे स्टेट्स के पास उस हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के लिए आपके पास वाटर नहीं है, बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड बिकॉज ऑफ जो हमारे पास इरिगेशन ऑफ वाटर होनी चाहिए सप्लाई वो उस टाइम में उनके पास नहीं थी। सो दैट not entire India got advantage of the high yield variety seeds, that was green revolution। और इंडियन सॉइल की बात करें यहाँ पे इंडियन गैंजेटिक प्लेन्स में आप देखोगे लाइक कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, दैट डेल्टास और ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट आर मोस्ट फर्टाइल, राइट। दैट फॉलोड बाय द ब्लैक कॉटन सॉइल्स ऑफ द डेक्कन, मालवा और सौराष्ट्र प्लेट्यू के आसपास आप अगर आप एरिया उस टाइम में देखें तो। सो इन शॉर्ट ये जो क्रॉप्स हैं ऑब्वियस उसके लिए वाटर अवेलेबिलिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस ऑल थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। और नॉर्मल बोरंग जब हमारे यहाँ पे 1982 में जो नॉर्मल बोरंग साहब हैं जो हमारे जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है, जब 1982 में ये पंजाब आए थे तो उस टाइम में उन्होंने बताया था कि यहाँ पे MS स्वामीनाथन से कि सजेस्ट किया था कि आप इंडिया में भी यहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ कर सकते हैं। This article basically talking about India disability inclusion and power of buy। अब इस आर्टिकल में मेनली क्या चीज़ें दी गई है, जस्ट वेट। So in short if you talk about, तो यहाँ पे इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है इन द रूरल एरियाज़। अ मेजॉरिटी ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज़ लिव हियर। बेसिकली यहाँ पे जो हमारा आउटकम है जीडीपी में, उसके बाद स्पार्क प्रोजेक्ट हमारा क्या कहता है। स्पार्क प्रोजेक्ट का मतलब बेसिकली क्या है, जो हमारा स्पार्क प्रोजेक्ट है इसका मतलब क्या होता है। स्पार्क का मतलब होता है लाइक स्पार्किंग डिसएबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। सो ILO जो हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD ने इन कोलैबोरेशन विद द वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन महाराष्ट्र आर इम्प्लीमेंटिंग द स्पार्किंग डिसएबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन स्पार्क प्रोजेक्ट। थ्रू दिस प्रोजेक्ट पर्सन विद डिसएबिलिटी वर पुट इन द लीड बीइंग आइडेंटिफाइड फ्रॉम विलेज। देखो गांव की जो इकॉनमी है उसको
उसके वेलफेयर के लिए ये स्कीम्स लॉन्च करने जा रही है गवर्नमेंट। सो इन शॉर्ट यहाँ पे आप देखो तो ये जो आर्टिकल है बेसिकली हमारी रूरल जो इकॉनमी है उसके बारे में बात करता है। एंड इन इंडिया central and state government have various schemes for person with disabilities and unique person with disability UDID card that established as a part of Right of Persons with Disability Act 2016 के according. So बहुत सारे developmental schemes हैं that to exclude them and they are viewed to object of charity and not as a person with agency with an ability to participate in decision making process. Rural areas also have high agriculture dependence and face the heightened risk of climate calamities arising from the like rising sea level. जैसे अभी आप देख सकते हो जो हमारा मिशोंग है साइक्लोन्स, उसके क्या क्या आपके चेन्नई में मोर देन 5 डेथ वॉज रिकॉर्डेड। तो ये सारे जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं उससे बचने के लिए उससे क्या क्या इम्पैक्ट होता है इकॉनमी के ऊपर, वो सारी चीज़ें मेंशन हुई है। नाउ इट्स टाइम टू क्विक टिप्स, और आज के टिप्स में देखेंगे सार्क कंट्रीज़ को लर्न करने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक्स हैं। इसके लिए हमने लर्न किया MBBS पेन, एम स्टैंड फॉर मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। और ये है स्टेट इन इंडिया शेयरिंग बाउंड्री विद भूटान, उसमें साब विच मीन्स सिक्किम, अरुणाचल, असम एंड बंगाल। Now it's time to questions of the day, and here is the very first question. Rat hole mining is correct. So it refers to hazardous and illegal practice related to the coal extraction in certain region. So जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए थे फॉर द कोलैप्स्ड सिल्क्रिया टनल इन उत्तराकाशी, रैट माइनर्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन कंप्लीटिंग द ड्रिलिंग प्रोसेस। रैट होल माइनिंग जो होती है काइंड ऑफ मैनुअल ड्रिलिंग कॉमन्स इन मेघालय, इन्वॉल्व स्किल वर्कर्स डिगिंग नैरो पिट्स जस्ट वाइड इनफ फॉर वन पर्सन। इसको फिर NGT ने बैन किया था इस प्रैक्टिस को 2014 में, एंड रिटेन द बैन इन 2015 ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। उसके बाद है आपका अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच वन? नीति आयोग, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। ये है आपका अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट, ICCR देती है, डी ऑप्शन। Which of the following groups of planets are considered as gas giants in our solar system? और वो इसमें राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन। गैस जाइंट्स आर लार्ज प्लैनेट्स कंपोज्ड मोस्टली ऑफ गैसेस सच एज, जिसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम विद अ रिलेटिवली स्मॉल रॉकी कोर। द गैस जाइंट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर, सैटर्न, Uranus and Neptune together make up a group known as Jovian planets. And the fourth one, which substance is commonly used in cloud seeding? Cloud seeding basically is another name of artificial rain. Artificial rain है, उसी को हम cloud seeding process कहते हैं. That to promote the formation of ice crystals in clouds. Here we have 4 options: sodium chloride, silver iodide, carbon dioxide and oxygen. So AGI we use silver iodide, so B would be the right answer. So silver iodide एक common substance होता है that is used in the cloud seeding process. जब इसको रिलीज करते हैं तो silver iodide particles जो that provides a surface for ice crystal to form around. And here we have last questions. Production gap report is published by World Trade Organization, World Economic Forum, International Monetary Forum and none of the above. International Monetary Fund and World Economic Forum and World Trade Organization. So production gap report जो है, the answer would be
None of the above. So it is authorized by SEI, which is Stockholm Environment Institute, ये इसे publish करती है, and UNEP, United Nations Environmental Programs. So this is all about the session, dear students. If you have any questions, please let me know in the comment section, and please share this beautiful session to your friends and family as well, because they must aware also what is happening around us. And make sure, if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon, so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. And we'll meet you tomorrow for the same. Till then, bye bye and take care.